Hello. Today we will do chapter first, real number, class 10th. The third topic. Uh, so, first topic is the introduction of the real number. Then the second video is related on Euclid division lemma and Euclid division algorithm. So, algorithm is a यूक्लिड डिवीजन लेमा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. पुराने समय में हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम ही कहते क्लास एट्थ में. डिवीजन एल्गोरिदम में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. नाउ क्लास नाइन्थ में ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, इसको लेमा कह दिया गया, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में. सो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. क्या हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कहा था? यूक्लिड डिवीजन लेमा. गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और b, then there exist then there exist q and r. Sorry, here is a there exist q and r q and r q and r that a is equal to bq plus r, where r is greater than and equal to 0 and less than b. Given positive integer a and b, there exist a unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r, where a is dividend, b is divisor, q is quotient, and r is remainder. And remainder is always greater than and equal to 0 and less than b. Okay. So some positive integer, यानी सम पॉजिटिव इंटीजर को लेकर के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. और ये क्वेश्चन कम बोर्ड के एग्जामिनेशन में टर्म 1 में एटलीस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो 3 या 2 मार्क्स में आता ही आता है. 1 मार्क्स में ये आएगा कि स्टेट और डिफाइन यूक्लिड डिवीजन लेमा, एंड 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में सम पॉजिटिव इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू सम पॉजिटिव इंटीजर. सो लेट टेक question number 1. So that any positive integer of the form 2q and that positive odd integer of the form 2q plus 1, where q is some integers. So that any positive even, मैंने सो करो कि जो पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? 2q फॉर्म के. और जो ऑड इंटीजर होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? 2q plus 1 फॉर्म के होते हैं. ओके. So let's solve. So prove. Let a be any positive integer. Let a be any positive integer. Okay. Let a be any positive integer and b is equal to 2. b is equal to, मैंने 2 लिया, जो यहां होगा उसी को b मानेंगे हम. ओके. सो हियर इज b is 2, here b is also 2. So b. So by Euclid division lemma, Euclid's division lemma, Euclid's division lemma, Euclid's division lemma, a is equal to 2q plus r. Okay. Where r is equal to 0 or 1. Why? Because r is greater than and equal to 0 and less than b. और b मेरा यहाँ कितना है? 2. b मेरा यहाँ कितना है? 2. ओके. आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब हम इसको एक बार r को 0 मानेंगे और एक बार r को 1 मानेंगे. तो केस फर्स्ट when r is equal to 0, r is equal to 0, so a is equal to 2q, a is equal to 2q. Okay. Case 2, when r is equal to 1, r is equal to 1, r is equal to 1. so क्या होगा? a is equal to 2q plus 1. a is equal to 2q plus 1 होगा. a is equal to 2q plus 1. so यहाँ ध्यान से देखिए, a is equal to 2q. so ये जो फर्स्ट केस है ये मल्टीपल ऑफ 2 है.
ये दिस वन इज मल्टीपल ऑफ टू, सो इट इज इवन, और ये मल्टीपल ऑफ टू नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, ऑड होगा. ओके, इट इज मल्टीपल ऑफ टू, सो इट इज odd, sorry, even, and it is, so here is, so या आप सो मत लिखिए, since a is equal to 2q is multiple of multiple of 2, so even, so even, and 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 a is equal to 2q plus 1 is odd, because it's not a multiple of 2, because it is not multiple of 2, multiple of 2. Okay, I hope so, कोई problem नहीं है, it is easy. Okay, so now let's do question number 2 of some integers. Okay, so I'm rubbing it. So now you have written this one, so I will rough this one also, because it make me so spacious. So question number 2. So question number 2 is 2, so that so that so that any odd positive integer, any odd positive integer, odd positive integer, any odd positive integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 1, or or 4q plus 3, 4q plus 3, where q is some positive integer, where q is some positive integer, some positive integer, so that any positive integer is of the form of 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is some positive integer. Okay, so now let's prove that. Let's prove. So again, same procedure as question number 1. So let a be any odd positive integer, odd positive integer, odd positive integer, and b is equal to, what is the value of b is 4. Okay, b is equal to 4. So by Euclid division lemma, by Euclid's division lemma, Euclid division lemma a is equal to 4q plus r, 4q plus r, where r is equal to 0, 1, 2 and 3, since
since r is always greater than 0 and less than b, and here b is 4. Okay. Okay, so now स्टार्ट करते हैं. आर की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे और 3 रखेंगे. ओके, सो केस फर्स्ट a is equal to 4q, yeah, when r is equal to 0. Case first, when r is equal to 0, then a is equal to 4q. Okay, case 2, when r is equal to 1, then a is equal to 4q plus 1. Case 3, when r is equal to 2, then a is equal to 4q plus 2. Case 4, when r is equal to 3, then a is equal to 4q plus 3. Okay. ओके, आई होप सो यू हैव नो प्रॉब्लम. सो मुझे प्रूफ क्या करना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म होंगे. दे आर इन द फॉर्म ऑफ 4q+1 and 4q. So here is a no space, so I will write here. So I am writing here. So since 4q and 4q plus 2 is multiple of 2, is multiple of 2, so it is even. So it is even. Okay, and 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 4q plus 1 and 4q plus 2 is not multiple of 2, not multiple of 2, 2. So it is odd. So it is odd. So it is proof. ये प्रूव हो गया कि जितने भी 4q+1 और 4q+3 के फॉर्म में होंगे वो 2 के मल्टीपल नहीं है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड? अ नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड ऑड. ओके, अ नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड ऑड. जो 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन, एंड जो 2 से डिवाइड नहीं होते दैट इज odd. Okay, so I hope so question number 1 and question number 2, when you relate these two questions, it is easy to understand. Okay, so now question number 3, I'm rubbing it. Question number 3, the third one is using Euclid division lemma. Using Euclid division lemma, so that the square of any positive integer
integer integer is either of the form of is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integers, for some integers, for some integers. So proof ओके प्रूफ करते हैं अब हम लोग. So using Euclid division lemma, so that square of any positive is same statement as question number 1 and 2. So let a be any positive integer. So let a be any positive integer, positive integer, and b is equal to, what is the value of b? 3. So b is equal to 3. So r की value 1 2 0 1 2. Okay. So by Euclid division lemma, so by Euclid division lemma a is equal to 3q plus r. 3q plus r, standard form. So where r is equal to 0 1 2, since r is greater than or equal to 0 and less than b. Okay. So now case first. So पहले सबसे पहले यहाँ क्या दिया, square of any positive integer. So let's square it. So now squaring both side, squaring both side, both side. So a square is equal to a plus b का whole square is a square plus b square plus 2ab. It means 6r cube. Okay, this one is squaring. Okay. ओके. सो अब क्या करेंगे, r की वैल्यू 0 1 2 पुट करेंगे. तो केस फर्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू 0, r is equal to 0. So we r is equal to 0. So a is equal to, so a square is equal to 9 q square, 9q square plus r की value is 0 and r की value, so this is 690q. Okay, so you can write it also 3 common, so 3q square, q square. So let 3q square is equal to m, so a square is equal to 3m. Okay, 3m. Any problem? No. So case 2, when r is equal to 1, when r is equal to 1, so a square is equal to, so a square is equal to, so a square is equal to 9 q square, r की value 1 and this is 6q. Okay, so here what is common? So 3 is common, so you will, so 3 is common, so this is 3q square plus 2q plus 1. Okay, so let 3q square plus 2q is equal to m. So a square is equal to 3m plus 1. 3m plus 1. This is case 2. Okay, I hope so you have no problem.
So case 3, so here I will write case 3. Case 3, when r is equal to 2, when r is equal to 2, so so a square is equal to 9 q square, 2 2s are 4 and 6 2s are 12 q. Okay, I hope so, no problem. So what is the common between them is, so wait, so let a square, it can be written as 9q square plus 12q प्लस 3 + 1, इसको लिख सकते हैं हम लोग. 4 कैन बी रिटन एज 3 + 1. सो इन सब में क्या कॉमन है? 3. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, कॉमन हो गया 9q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1. ओके, सो थोड़ा सा और इधर लिख देती हूँ मैं इसको. सो a square is equal to 3 is common, so 3q² plus 4q plus 1, and this is 1. Okay, so let 3q² plus 4q plus 1 is equal to m, so a square is equal to 3m plus 1. 3m plus 1. Okay, so I will write here the conclusion. This is my conclusion. What we can observe from case 1 and case 2 and case 3. Case 1 3m, case 2 3m plus 1, and case 3 3m plus 1. So same आप लिख दीजिएगा. Square of any positive integer either form of 3m or 3 plus m. So square of any positive integer, square of any positive integer of the form is either of the form is either of the form 3m or 3m plus 1. Okay, I hope so, no problem. Okay, next, this is the question number 3 of a positive integer. So let's do question number 4. So I do the partition of this one because it is easy to understand. So I make a partition for this because for it making me so spacious. So question number 4. Question number 4. So that so that so that any positive integer any positive integer any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. Okay, for some integer where q is some integers. Solution, sorry, proof. Okay, same as you have written in the question number 1 2 3. Let a be any positive integer, odd positive integer. Let a be any
positive integer, odd positive integer, odd positive integer. Okay, and b is equal to, what is the value of b? 6, and odd positive integer, and b is equal to 6. Okay, so by Euclid division lemma, by Euclid division division lemma, lemma a is equal to, b की value is 6q plus r, where r is equal to, where r is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Why? Because r is greater than or equal to 0 and less than 6. Okay, so start करते हैं. Case first at r is equal to 0, a is equal to 6q. Case 2 at r is equal to 1, a is equal to 6q plus 1. At case 3 at r is equal to 2, a is equal to 6q plus 2. Case 4 at r is equal to 3, a is equal to 6q plus 3. Case 4, case 5 at r is equal to 4, a is equal to 6q plus 4. And case 6 at r is equal to 5, a is equal to 6q plus 5. Okay, from this so what you want to observe, that case 2, case 1, case 3, case 5, since 6q 6q plus 2 and 6q plus 4 are multiple of 2, so it is even. So it is even. It is even. Okay, next. And and 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 4 are odd. Okay, so 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 is not a multiple of 2, so it is odd. Okay, I hope so you have a no confusion into question number 4 also. So I will give you a homework for question number 5 and give you a hint. So use Euclid division lemma. Use Euclid division lemma. Division lemma. Lemma to show that to show that the cube of any positive integer of the form 9m 9m plus 1 and or
9m+8। ओके, आपको ये शो करना है कि इसका जो क्यूब होगा वो आपका 9m या 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म। हिंट मैं आपको लिख दे रही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये सॉल्व करके हिंट मैंने दे दी हूँ कि ए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 3। आप बी इज इक्वल टू 3 लेंगे, और 3 लेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा आपका 0 1 2। ओके, 0 1 2। वाई आई एम नॉट टेकिंग 9, बिकॉज 1 to 4 में तो हमने वही लिया जो यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, बट यहाँ पे 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, क्यूब, और 9 का मैंने क्यूब किया तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, इट इज सो बिग। और मुझे क्या चाहिए, 9m चाहिए और 9m+1 चाहिए। सो 3 का क्यूब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये 9 का मल्टीपल हो जाएगा। ओके, तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस r करेंगे, r की वैल्यू 0, फिर उसके बाद क्यूब कर देंगे इसका। सो कुछ यहाँ पे आएगा क्यूब करने में, r की वैल्यू 0 1 2 3 पुट कर दीजिएगा, एंड टेक यू विल टेक एन स्टेप and you will reach at the answer. Okay, so give me the any query you may comment on a comment box. Okay, thank you.